sir. So, good evening, all of you, and it's a real great opportunity, and I'm thankful that you all have invited me today. Our organizing team will start, please, at first. Yes. Yes. Sure. Okay. Prakash sir. Karad sir. Karad sir. ढोले मॅडम, यू कॅन स्टार्ट. हा सर. तुम्ही सुरुवात करा, सरांना ऐकू जात नाही. नाही करायला लागेल सर, चालू आहे सर. ओके ओके. असू द्या, वेळ चाललाय, तुम्ही करा मॅडम. बरं नाही वाटत ते. सर सर तुम्हालाच फक्त ऐकू येत नाही बहुतेक. चालू आहे सर. Clear that to enrich the knowledge, to spread the knowledge, and to have the intellectual discussions on it. And this webinar series is smoothly going on because of the academic leadership of the Principal Honorable Dr. M. Ambedkar sir. In the beginning of this webinar, I welcome him as the chairperson of this national webinar. I am very pleased to welcome today's honorable keynote speaker, Mamta Prasad ma'am from Dhanbad, Jharkhand, India. On behalf of the organizing committee of webinar series, Shri Kumarswami College Ausa, I also welcome all the honorable dignitaries of the organizing committee, Vice Principal SD Misal sir, Ravindra Karanje sir, Praveen Udge sir, IQAC coordinator Dr. Sanjay Kali sir, Sudhir Garad sir, Ambadas Killari sir, Dr. Patwari sir, and Dr. Wadkar sir. The speech will be started soon, but before that, I would like to invite Dr. Anita Dhole ma'am to introduce today's chief guest and keynote speaker. Please ma'am, welcome. Thank you sir. A very good evening to one and all. You are welcome to this grand and successful webinar series organized by Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa. So firstly, I am very thankful to respected Principal and Chief Organizer Dr. Ambedkar MM for giving me an opportunity to introduce resource person on this virtual platform. My special thanks goes to all the respected organizing committee members, IQAC coordinator and staff members. Those are supporting like backbone of this series. And a big thanks to all the respected participants who are joining very regularly from all over India and abroad also. And they are making this series very successful series. So I am very happy to introduce today's keynote speaker. Today's resource person is Honorable Mamta Prasad ma'am, Dhanbad, Jharkhand, India. Title of speech is Financial Awareness and its Rational Management. Ma'am has achieved master's degree in business administration and management. She is UGC NET qualified in MBA and ex-associate dean of Usha Martin Academy, Dhanbad.
Dhanbad, and she has 25 years of work experience. Since 2002, she has been worked into higher education with various institutions and colleges as a full-time as well as visiting faculty. Currently, she is working in verbal aptitude and DILR training to CAT and other government exam preparation. She is associated with reputed organizations such as Unacademy, Dhanbad Classes, Triumphant Institute of Management Education. She is visiting faculty of Management Studies in Business Administration, Department of P.K. Roy College. She also visits as a guest faculty to P.K. Roy Memorial College, Dhanbad. So, with this introduction, I would like to request Honorable Mamta ma'am, please start your presentation. Thank you. Good evening and grand thanks to Kumarswami College for having me over here. Thank you, Dr. Vedkar sir. Thank you, Anita Dhole ma'am, to give me such a warm welcome, to extend such a warm welcome, Prasad sir, and all the dignitaries there on the platform. Thank you. Thank you for having me here. I'm really honored to have got a chance to talk upon a topic which I think is, very important, keeping in mind the kind of, time that we are going through, right? Finances has always been a very important part of all of our lives. Yes, of course, people have been saying a lot of things about it. Some say money can be, passed around, but never be enough. That is what people say. Money is something that will never be enough for anyone. I mean, no matter how much you have. And money, often people say, makes the world go around. It's the money that is moving the world. At the same time, you all must have heard people saying that money is the root cause of all the evils. So that is also said about it. So in Hindi also it's said it's an Urdu saying कि पैसा खुदा तो नहीं है, but take my words, खुदा से कम भी नहीं है, उसके बिना चलता नहीं है, right? So that way, if we say yes, money have been and will be a very important part of us, and there is no shame in being born. And this is again a very old proverb, and you all must have heard about it. People keep on saying this, that it's no shame in being born poor, but dying poor, something was wrong with us. We did something wrong. We did not manage our money well. And this goes for everyone, because I'll give you examples. I'll talk about a few things and you will be astonished. I live in Jharkhand, right, which is quite close to Kolkata. I mean, it's quite close to Bengal. So when I was working with Usha Martin, so I was supposed to visit Kolkata every month, because we had an academic meet every month over there. So I had to represent my college over there. So I had to go there. So while going there, each time when I traveled in the train, I came across a beggar. Right? So that beggar, I got to know later, once, twice, thrice I saw him. So then I got to know that the beggar was a millionaire. I simply did not believe, no one would actually. And he was still begging. The best part is that he was still begging. A beggar being a millionaire is a big thing. And मैंने पूछा, to my co-passenger who was a daily passenger actually. So I asked how and what happened, and how the person is a millionaire and still, he is begging. So he said because he thinks that this begging that has made him millionaire. So he has been begging since his early
childhood. Now he was somewhere around 70, approaching 70 of age. So he has created a lot of wealth for himself. So how did he do that? And at the same time, I am very, very sure that you all must have come across a few names who might have been very wealthy at a point of time, and today they are at a very, very, bad financial condition. Right? They are in a very, very bad financial condition. Why is that again? So it is all because of a proper management or mismanagement of the finance. Right? So when people say no, the finance is not my cup of tea, I say it is everybody's concern. Everybody needs to know about it. Why? Because we all have been doing it. Please do not get confused with accounts. Right? Finance is not accounts. Finance is actually related to all the resources that help us to do whatever we want to do for ourselves. And finance is that very resource that actually helps us to understand our actual needs, fulfill it, and be successful. At least fulfill all our liabilities in the most appropriate manner. That is what it is meant for. Nevertheless, whenever we talk of people, about money, whenever we talk to them, it has been a taboo in India. People don't like talking about money. They have a lot of questions, nevertheless. But then they would not talk about money. They would not talk about their financial position. Somehow, if they are very well off, then too they won't like to talk about it, thinking, I don't know what people think about it, but then, they don't prefer talking about it. Those who are, something, below that level, or who do not have adequate, they also, are hesitant talking about money. उनको भी पैसों के बारे में बात नहीं करना होता है. नहीं फिनांसेस का डिस्कशन नहीं करो. आप मेरे से मेरा इनकम क्यों पूछेंगे? These are very common, things that you all must have come across. So, but I would say that finances have always been a part of our lives. हम लोगों ने सबने अपने अपने लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, अपने पेरेंट्स को देखा है, आप सबने अपने घर में लेडीज को, मम्मा को, अपने मदर को, अपने सिस्टर्स को, वाइफ्स को देखा होगा, कीपिंग अ सर्टेन अमाउंट असाइड, वो रखते हुए आपने देखा होगा. एंड they would surprise you whenever at the time of need they would come up with that would fetch you a lot of money and kind of relieve you from a lot of stress. वो पैसा आपको बहुत सारे स्ट्रेस से बचा लेता था. तो मैनेजमेंट हमारे फैमिलीज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जिंदगी में हमेशा से रहा है. ये और बात है कि we have never realized that this is what was management of it. So today I am going to let's get actually started. So I'll rather share a presentation with you all, and then we'll keep on talking as well. That of course will be there. So let me share my screen with you. Just a second. I hope the presentation is visible to you all. Yes, ma'am. Is it? Yes, ma'am. Thank you. So we are, as we know, this is the topic, financial awareness, and it's rational management. Why? Because everybody differ in their needs, and therefore the approach will also differ. But then there are a few common things which will remain common and which will be the basics for our management. And this awareness, is the demand of the time. This is something so very important, and this is a field that people generally, which is not a part of our curriculum as well. So we actually teach our children everything, but not to manage their finances, and that might be one of the reasons why we are not that stable financially. Had we
their childhood, they would have certainly grown up to become a very, very mature financial handlers. They do not need an MBA degree or a financial management expertise to manage their finances. What is important is a rational thought process and a few steps which are mandatory kind of to make yourself financially sound. अपने आप को financially sound बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें, लोगों को लगता है यार अपने पास तो इतना भी नहीं होता है कि अपने खर्चे पूरे हो जाएं, और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, क्या ही मैनेज करें. मैं बात करूंगी उन्हीं चीजों के बारे में कि हम क्या बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर एक बेगर, मैंने इस सेशन की शुरुआत उस बेगर के एग्जांपल से की थी. अगर एक बेगर मिलियनेयर बन सकता है तो एंड उसने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई थी. नो, इट वाज ऑल a proper financial management, and we'll talk about it, right? Okay, so people, as I said, often avoid talking about money, but many people have a million questions about what to do with it. If they have questions what to do with it. If they don't have, they still have a question what to do in order to get there. And once you get it, what should be done to retain it, right? So getting money is not that big an issue as it is to retain it for yourself for the time when you would actually need it, right? So we'll be talking about it. Now, what is financial awareness? As we just have been talking about it. What is financial awareness? So it's the ability to use our knowledge and skill to manage the monetary resources in the best possible way to make our lives better. And sometimes people around us also. Yes, I think it is one of our duties to make people aware of these things. These small things, no, they actually create a big difference. So it equips us with the knowledge and skill we need to manage our money effectively. So once we are aware of the financial aspects of our life, we will definitely manage it in the best possible way. Now, what is the current state? Most high school graduates and school students are not prepared to manage their personal finances. So all of a sudden, when nowadays we all know what happens. कि ज़्यादातर बच्चे अगर किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी अच्छी जगह से पास आउट हो रहे हैं, उनको वहाँ एडमिशन लेने के लिए लोन्स लेना पड़ता है कई बार. एंड वो लोन्स लेके when they come out of their college, even after getting a good job, they are burdened with a debt. उनके सर पे अभी जब वो समय था कि जब उनके पास पैसे आने शुरू हुए थे, वो अपने लाइफ को बहुत आराम से गुजार सकते थे. उस समय उनके सर पे कर्ज का बोझ होता है और उन्हें नहीं सिखाया गया है कि वो उससे कैसे मैनेज करें. मैं आपको लोगान एलेक के बारे में बताती हूँ. उनकी भी यही थी कि जब वो पास आउट हुए कॉलेज से एंड he got a good job with a handsome salary, but that was not enough because he had to fulfill so many things of his. He did not come from a very financially strong background family. तो obviously घर में पीछे भी बहुत सारी liabilities थी और उनको अपने लिए भी बहुत कुछ करना था. He did not have any basic things that generally those stature people have. जिस stature में उनको job मिली थी, उस stature के लोगों के पास जो चीजें होती हैं वो उनके पास नहीं थी, तो उनको उस पे भी खर्च करना था. And he had a lot of debt on him. तो उतना कर्ज चुकाना है. एक दिन अपने कैबिन में सोचते सोचते he actually collapsed out of stress, and that person later on became the CEO of Money Done Right, and the rest is the story. So ये कैसे possible हुआ? Parents are not providing the financial experience. We'll talk about it. कैसे possible हुआ? वही तो हम लोग करने वाले हैं. Parents are not providing the financial experience students need and often lack the experience, sometimes even themselves. They've been leading their life, earning throughout the life, spending it, but they do not have that kind of an experience.
There is an uneven delivery and availability of personal finance education. Again, as I said, we as college and universities are slow to respond to this growing need. Yes, this is, as I said, no, people don't think that this is essential. What they think is this is the matter of management department. This is the matter of, those people who are dealing with commerce. It's none of our business, but take my word, this is the business of each and every stream, no matter what it is. Because उसके बिना तो चलता ही नहीं है ना, मैंने पहले ही बोला उसके बिना नहीं चलता है. So why is this important? It is important because it equips us with the knowledge and skill. We've already talked about it. I'll not repeat it again. Nearly 70% of our working population, those who are working, so they have, a fixed earning as such. So doesn't expect to have enough money to retire comfortably. Yes, this is a big issue. कि जो लोग काम कर रहे हैं आज, उनको लगता है कि जब वो रिटायर, क्योंकि उनके पास कुछ बचता नहीं है ना, तो उनको लगता है जब वो रिटायर होंगे तो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि उसके बाद की जिंदगी उनकी कैसे चलेगी. That is a big issue. अच्छा, फिर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, जो लोग वर्क फोर्स है, वर्किंग पीपल हैं, कहीं और काम कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे, उनके साथ ये कहानी है. नहीं, this is even for the people who are into business. Their physical conditions would not allow them to work the way they are working today. So they have to retire at a point of time. So, I mean, I'm not talking about those big business houses. I'm talking about those people who run small business for their livelihood. उनका क्या? वो क्या करते हैं अपनी livelihood के लिए, retirement के बाद, post retirement, what are they going to do? So, about that. Nowadays, in the urban society, credit cards have become very common. But with credit card, what comes is a lot of burden of debt, right? And it is reaching again its peak. And जैसे जैसे ये बढ़ेगा, क्या होगा? Stress होगी, because people have to pay it back as well, and that would again call for a proper financial management. So huge percent of people can't afford any emergency expenses because उनकी तो पूरी सैलरी इसी पे चली जाती है ना. क्रेडिट कार्ड मिल गई थी, EMI अवेलेबल था, ढेर सारी चीजें खरीद ली और हर महीने उसके इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं. उसके बाद जो बचता है उससे घर का खर्चा मुश्किल से निकलता है, बचा तो कुछ है ही नहीं ना. ऑल ऑफ अ सडन अगर एक इमरजेंसी आ गई तो या तो किसी से बोरो करना पड़ता है और नहीं तो हमें पैनिक अटैक्स आते हैं. सो दीज आर the actual scenario of an average population. So let's get started. What to do? So we'll be just, मैं सिर्फ problems नहीं pose कर रही हूँ आपके सामने, मैं कुछ बातें बताऊंगी जिससे कि हम इसको ease out कर सके. So 8 easy ways to start off with, things to get you talking and thinking about your money. So we'll be talking about those things that will make you think about your money. Okay, so the first one, we can start with small things. Yes, in order to be financially stable, we have to make money first. And how to make money? There are various ways of making money. Do whatever you are good at. पड़ोसी को देख के, सोसाइटी को देख के, अपने पेयर ग्रुप को देख के, पेयर प्रेशर में हम ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आते हैं. हाँ, साथ में ये भी है कि कई बार हम फाइनेंशियली वाइज भी हो जाते हैं, बीइंग विद द पीपल अराउंड, बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, राइट, ह्यूमन बीइंग्स. तो वहां से ही हम सीखते हैं. पर कई बार ये पेयर प्रेशर में हम बहुत सारे फाइनेंशियल डेट्स में चले जाते हैं. लोगों को देखते हैं, उनके पास ये है, उनके साथ रहने के लिए हमें भी अपने स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा. एंड वी डू नॉट पे हीड टू अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग इज मेक मनी एट whatever level you are and whatever you are good at. आप जो चीज में अच्छे हैं वो चीज आप जरूर अच्छे से कर पाएंगे. We'll talk about it. This is altogether, a different topic. We can talk about it sometimes. The second one is, once you start making money, do not forget to save.
अब I know there will be a lot of question, मैम बचता ही नहीं है, कहाँ से बचाएं? I'll tell about it, कैसे बचाते हैं. Then savings, as you have the savings, they have to be accumulated, उनको इकट्ठा करो. और उसके बाद what is important is whatever you have accumulated has to be protected in a proper way. So we'll talk about them all, how to do that. So we can start small, as I said. If one is already on a tight budget, पहले से ही यही कहते हैं ना, सब लोग बोलेंगे, मुझे मालूम है, बोलेंगे लोग कि पहले ही से इतनी टाइट बजट है, मंथ के एंड में कुछ होता ही नहीं हाथ में. Saving anything, ma'am, what are you talking about? You know, is that a practical solution that you're giving to us? Yes, what I'm talking about is practical, and I'll talk about it. If someone is already on a tight budget, saving anything can seem impossible. However, even if the saving is a few bucks, you know, few rupees, they will still add up to make a big one. अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, वो डेली कमाते हैं, हमें मालूम है, वो डेली कमाते हैं और डेली खर्च करते हैं. सो दे गेट समवेयर अराउंड, से मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर उन्होंने एक दिन का 200 रुपये भी कमाया सपोज, या 150 रुपये कमाया, अगर उनको कम भी मिली होती तो वो उस दिन का खाना खाते और जैसे भी खाते. तो अगर उनकी 7-8 लोगों की फैमिली है, उसके लिए उनको लाना है, तो वो ऐसा थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं ना कि दे हैव नॉट अर्न द 30% ऑफ इट. मतलब कि अगर उनका 200 का इनकम था तो उसकी 30% उन्होंने अर्न ही नहीं की, ऐसा मान के चले, अर्न ही नहीं किया. आज की कमाई 140 रुपए थी, 60 रुपए अलग करके रखा है, एंड दिस 30 गोज फॉर ऑल. जिसकी कमाई 12 लाख है और जिसकी कमाई 1200 है. आई मीन दैट हैज टू बी केप्ट असाइड. भूल जाइए कि यू हैव अर्न दैट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन सेव इट. Either, and once you start doing it, no, it will become, and बाद में जब आपको दिखेगा ना, after say a month or two, कि आपके पास कितने पैसे हो गए, वो छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के आपके पास कितने पैसे हो गए, once you see that, no, that will definitely motivate you for further saving, right? So breaking down big to do's into smaller ones. बड़ा जो करना है ना, बड़ी सेविंग करनी है, उसके लिए छोटे छोटे कर लेना. आपने देखा होगा कि इसीलिए बैंक उस तरह के बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज उस तरह के स्कीम्स चलाती है जिसमें रोज छोटे छोटे शॉपकीपर्स के पास ये बंदे आते हैं, दे कलेक्ट से 100 रुपीज, 50 रुपीज, हाँ, जैसा भी उन लोगों ने तय किया. तो वो एक तरह की उनकी सेविंग, वो हर दिन के हिसाब से उतना पैसा रख रहे हैं, एंड दैट एड्स अप टू गिव देम अ बिग अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर point of time, and that is very very helpful for them whenever they are in dire need of it, right? Okay, the second one is fund your emergency saving. मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बोला था कि आपके घर की लेडीज के लिए आपने जरूर देखा होगा, कभी मम्मी को देखा होगा कि उन्होंने किसी किचन के किसी डब्बे में पैसे डाल के रखे हैं, कभी कहीं और छिपा के रखा है. I don't advocate this, although कि पैसे अगर रखने हैं तो सही जगह पे रखिए, because that is again वो फिर एक अलग टॉपिक है जिस पे मैं कभी बात करूंगी कि that is a financial crime जब हम पैसों को रोक के रखते हैं अपने पास. हाँ, वो हो तो हमारे पास बट डिजिटल फॉर्म में, तो इससे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, बट प्रॉपर वे में सेव करें. एनीवेज, so but पहले के जमाने में ऐसे ही करते थे लोग. So I am giving you that example. So the foundation of any financial plan is building and maintaining an emergency fund. Now ये fund बहुत important है, और आज के डेट में we have various things, you know, that might occur to us, all of us are there. तो इसलिए we need to, those who are well off, they should definitely invest into some medical insurance kind of things, so that, because सबसे बड़ी इमरजेंसी वहीं पे आती है, all of a sudden आ गई, आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको वो खर्च करने ही पड़ते हैं, और एक ऐसा खर्च आपके सारे फिनेंसेस को तहस नहस कर देता है. I mean it actually spoils it all. So what is important is that we should make emergency savings. I mean that is a contingency fund which should be kept aside all the time, and should, I mean just like this one,
It should be broken only when it is very, very important for us, right? Okay. So the third one is the money that you are keeping aside should be put into उसको मैंने बोला ना कि प्लीज उसको आप अपने किसी डब्बे में डाल के मत रखिए. Put into something that would give you a high yield. तो अब इसके लिए टुडे आज के दिन में लोगों को सोचना नहीं है. इतने सारे एप्स अवेलेबल है, इतनी सारी जगह अवेलेबल है that will give you a clear idea as to where you should be investing. A comparative study can be done कि आप कहाँ पैसे डालोगे तो आपको कितना रिटर्न आएगा. सेविंग अकाउंट खास करके यहाँ पे मैं I'm not talking about investing into stock. I'm not talking about investing into any such instrument. What I am talking about is putting it into a saving account. लेकिन कौन से saving account में जिसमें थोड़ा high yield हमें मिल रहा है. So you should do a proper research before investing, not investing, rather saving, putting it into that saving account. उसके पहले आपको एक proper research कर लेना चाहिए. किसी ने बोल दिया इसलिए जाके आप उस बैंक में उस सेविंग अकाउंट खोल के डाल दोगे, ऐसा नहीं है. हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर वो छोटा सा डिफरेंस भी क्रिएट सम डिफरेंस, राइट? सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट. री-इवैल्यूएट योर बजट. अभी हम सब ने वो टाइम देखा है, पैंडेमिक टाइम. पता चला आप लोगों को हाफ ऑफ आवर families did not, they realized that there were so many expenses that we were doing which was not required. हम लोग ऐसे कितने खर्चे कर रहे थे जिसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी. ये पैंडेमिक ने हमें सिखाया, राइट? इसका मतलब हम बिना मतलब की चीजों पे खर्च कर रहे थे और बचा नहीं रहे थे. दूसरी चीज जो हमें पैंडेमिक ने सिखाई, अभी हमें क्यों अपने बजट को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पहले वी यूज्ड टू ट्रैवल फॉर मोस्टली ट्रैवल टू आवर वर्क प्लेस, तो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी बहुत होते थे. आज के डेट में ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर कर्टेल्ड, राइट? व्हाट आर वी डूइंग विद इट? खाने का जितना तब खाते थे अब भी खाते, बस थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि घर में रहते हैं, तो वी कीप ऑन हैविंग दोस क्रेविंग्स. तो वो होगा, तो वो ठीक है, फूड की बजट थोड़ी बढ़ जाएगी, बट बाकी चीजें जो हमारी बच रही हैं, पहले एंटरटेनमेंट पे जितना गोइंग आउट वाज सो वेरी कॉमन, हैज एक्चुअली स्लैश्ड डाउन. सो व्हाट आर वी डूइंग विद इट? हैव वी इन्वेस्टेड इट एनीवे? तो आप साथ में बोलोगे मैम फिर तो साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी आई. But that gave a lot of employment opportunities as well. उसने बहुत सारे employment opportunities भी दिया है. अब आप घर बैठे वो बहुत सारे काम कर सकते हो. Just check it out. Reevaluate your budget. And जो भी चीजें अब फिर से जब सब ओपन अप होने लगा है, आप फिर से उसी पुराने बजट पे वापस मत जाइए. You can still revisit and check what was not that important. और जो उतना important नहीं था वो अभी भी उतना ही important नहीं है. Take my words. So, keep it aside. That will help you to plan your future. आप बोलोगे मैम आप तो बहुत बोरिंग हो, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी क्या हमारी? फिर कब खुश होंगे, कब एंटरटेन करेंगे? Take my words. उसके लिए भी मैं बताऊं कि क्या करना है, राइट? हम लोग 70-20 हम लोग 50-20 और 30 वाला प्रोपोर्शन की बात करेंगे. मैंने 30% बताया आपको सेविंग का. 20% आप अपने, अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप 20% साथ में रख सकते हैं. और जिसके पास भी जितना है, मान लो मैं 100 रुपए कमाती हूँ तो मैं 50 रुपए अपने हाउस होल्ड, जो मेरी नेसेसिटीज हैं, जिनके बिना मेरा काम नहीं चलता है, मेरी एकदम जरूरत क्या है, वो 50 रुपए में मान लो मैं कवर करूंगी. आई विल हैव टू, राइट? 30 मैं बचाऊंगी और 20 रुपए मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख लूंगी. अगर मैं बचा सकी तो उसको भी बचाऊंगी, बट देन अगर लगे कि नहीं यार फिर तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, मैं अपने साथ साथ घर वालों का भी कर रही हूँ, तो आई नॉट डू इट, राइट? सो दैट 20% गिवन, राइट? तो मैं एकदम बोरिंग नहीं हूँ, मतलब इतना बोरिंग भी मत समझिए, बट यस दैट कैन बी डन. ओके, एक बार आपने वो कर लिया, आपके पास पैसे हैं एंड यू नीड टू, अभी मैंने बताया बचा रहे इतना भाई, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे.
या तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेने, क्योंकि मेरी ज़रूरतें कुछ ऐसी थी कि मुझे लगा मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो मैंने सेविंग अकाउंट में रखा था कि उसमें थोड़ी थोड़ी भी बढ़ोतरी हो, तो मेरे लिए काफ़ी होगा आगे के समय में उस पैसे को यूज़ करना, क्योंकि मेरी ज़रूरत मुझे पहले से ही पता है कि फ्यूचर में मेरी ज़रूरत क्या होने वाली है। सो उसके लिए ठीक था। बट इफ मुझे लगता है कि वो एक साइड मैंने रखा है, अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे पैसे हैं जिनको मैं थोड़े रिस्क के साथ कहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो प्लीज गो अहेड. इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज equities and debt instruments as well. आप जहाँ चाहो वहाँ पैसे लगा सकते हैं. My suggestion would be never invest in a single thing. अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, एक ही चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो कहावत है ना कि don't put all your eggs in the same basket. एक बास्केट गिरा तो सारे eggs फूट जाएंगे. Keep them in different places, कि ये गिरा भी तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी उसको सपोर्ट करने के लिए. So please take these also into consideration. Important, very important. क्योंकि हमें क्या लगता है कि यार अभी तो लाइफ शुरू हुई है, retirement is light years ahead. नहीं, ऐसा नहीं होता है. When I at my juncture look back to see where I started my career, मुझे लगता है अभी कल की बात थी, और जब मैं ये देखने की अब कोशिश करती हूँ कि where is my retirement, तो मुझे वो भी कल ही लगता है. तो you can understand, I mean it time flies. So you need to start early and start planning for yourself. जिंदगी भर दूसरों के लिए करते हैं, ये आपके लिए होता है. This is for you, so that those who have never they financially dependent on others, जो कभी भी financially दूसरों पे depend नहीं हुए हैं, उनको अगर बाद में financially dependent होना पड़े, तो that is one of the very serious causes of stress. तो यार जिंदगी भर कितना स्ट्रेस लेना, रिटायरमेंट के बाद तो आराम करें, कम से वो स्ट्रेस तो ना हो. तो जितना भी हो अपना हो, अपने लिए सफिशिएंट हो, इतनी प्लानिंग हमें करनी चाहिए. और क्या क्या कंडीशंस आ सकते हैं, किसके लिए हमें क्यों रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए. बिकॉज विथ एज देयर विल बी हेल्थ इश्यूज, तो एंड वी ऑल नो व्हाट द हेल्थ केयर कॉस्ट इज लाइक. तो उसको मीट करने के लिए वी नीड दैट मच ऑफ मनी. देन मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे सबके बच्चे हमारे हैं ना, आई एडमिट दे आर देयर, बट फिर जैसे हम लोग जिस दौर से गुजरे थे और फिर भी वी हैड सो मच ऑफ थिंग्स टू डू, दे विल आल्सो हैव इट, नो. सो वी कैन एटलीस्ट रिलीव देम ऑफ आवर स्ट्रेस. थोड़ा तो कर सकते हैं. ओके, वंस वी हैव हाइड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ गई है, आपको क्या लगता है बढ़ जाना तो बहुत आसान होता है? इज इट that easy to come down again? No. If we do, again it will lead to dissatisfaction, hence stress. Stress से बचना है भाई. So this is important again. Inflation, yes, money will lose its value. तो इसीलिए मैंने बोला था डब्बे में मत रखिए. अगर डब्बे में आपने 100 रुपए रखे हैं ना, तो वो 100 रुपए आज के रेट में आपको जितनी चीजें खरीद के दे सकते थे ना, 5 साल बाद जब आप उस 100 रुपए को निकालोगे तो उसका आधा भी वो खरीद के नहीं देगा. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू घट गई है. वो 100 रुपए अब उस काबिल रहा ही नहीं. तो आपने तो उस पैसे की वैल्यू को कम कर दिया डब्बे में रख के. उसको अगर आपने कहीं और रखा होता तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिला होता, इंटरेस्ट रेट के पीछे की वजह ही यही है. यू गेट दैट इंटरेस्ट रेट बिकॉज द इन्फ्लेशन इज ईटिंग अवे द वैल्यू ऑफ द मनी. तो इंटरेस्ट उस वो जो खा जाता है ना इन्फ्लेशन, उसको पूरा करता है ताकि आपके पैसे की वैल्यू इंटैक्ट रहे. सो आई मीन वो ये टेक्निकल चीज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले ये पूरी कैलकुलेशन करके बताते. कभी अगर हम लोग डिटेल टेक्निकल सेशन में होंगे तो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट, राइट. सो प्लान योर डेट रीपेमेंट. यस यार, डेट्स एज आई सेड इज अ बिग स्ट्रेस. उसके साथ अगर रहना पड़े तो जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है. ये सोच के कि यार हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं. हालांकि हमारी सोसाइटी में कर्ज को बहुत बुरी तरीके से देखा. मैं ये नहीं कहती हूँ डेट इज रॉन्ग, इट इज नॉट गुड, नो. दैट इज अ वेरी बिग
फाइनेंशियल एड वो बहुत बड़ा हेल्प है, पर उसको आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए हाउ यू वुड बी पेइंग इट ऑफ, उसको कैसे पे ऑफ करेंगे आप. सो यू शुड हैव, आई मीन ये सब आपके पास पहले से तय होना चाहिए, आप सोच समझ के चलेंगे. व्हाट वुड बी योर प्लान ऑफ टैकलिंग योर डेट. अब इसको पुट ऑफ नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास एक से ज्यादा कर्ज है तो आप ये देखें कि आप कैसे उसको फुलफिल करना चाहते हैं, कैसे पे ऑफ करना चाहते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सबसे कम वाले उसको कम कर दे. अब दैट इज अगेन अ मोटिवेशन. एक कर्ज तो हट गया ना सर से, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. आप खुश होते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है अगले डेट को भी पे ऑफ करने की. कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग उल्टा करते हैं, बड़े वाले को हटा लो, छोटा वाला तो कैसे भी कर लेंगे. अगर और ज्यादा है और बहुत सारे का रिकॉर्ड रखने में मुश्किल हो रहा है तो पीपल कंसोलिडेटेड, एक बड़ा कर्ज लेके उसको चुकाते एंड देन दे कीप ऑन पेइंग इट ऑफ. सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, बट प्लीज डू गेट रिड ऑफ दीज. काम कर लीजिए इससे एंड दैट डू गेट रिड ऑफ इट, and that should be a part of your financial management, right? And I'm talking all about the personal finances. I'm not talking about a business finance, because business finance would again lead to all the technical things that I just gave a few references to. So yes, this is important. ये बहुत important है. अपने financial goals लिख लीजिए क्योंकि वो आपको motivate करते रहेंगे. You should sit down and figure out what those financial goals of yours are. क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, इमरजेंसी के लिए कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हो, बच्चों की शादी के लिए कर रहे हो, एक सुंदर सा वेकेशन के लिए कर रहे हो, आप एक अच्छी सी घर खरीदने के लिए कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो. आई मीन अभी से अगर आपने शुरू किया और उस गोल के बारे में सोचते रहे और उसके लिए पैसे साइड में रखते गए, कोई कारण नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबली उन सारे गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे. फिर जब आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहेंगे तो वो गोल्स आपको बोलेंगे यार मेरा क्या होगा, सोच लो मेरे बारे में भी, राइट? ओके, सो एज आई सेड, डिजिटाइज योर फाइनेंस. पैसे को एक तो ट्रैक रखने के लिए ना, उसका जो भी आपके पास जितनी फाइनेंसेस हैं उनका एक रिकॉर्ड रखना हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अब कितने चीज़ों का आप अपने पास अकाउंटेंट थोड़ी लेके चलेंगे, पर अगर आपने उसको डिजिटाइज कर रखा है, आज के डेट में सब लोग करते हैं. मतलब डिजिटाइज करना मतलब आप बैंक में डाल के रखे हो, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, सब कुछ आज के डेट में डिजिटल फॉर्म में है. तो इससे अच्छा तरीका ही नहीं है आप अपने फाइनेंसेस के सारे ट्रैक को रखने का. ये सबसे इजी तरीका है. बाकी का काम वो लोग कर लेते हैं, आपसे लेते हैं ना, हर महीने काटते हैं ना वो पैसे, तो वो उनके सर्विस चार्ज में जुड़ा होता है, इसलिए यू डू नॉट नीड एन असिस्टेंट एज सच. सो प्लीज डू डिजिटाइज योर फाइनेंस. So if you follow all these 9 steps that I was talking about, we are financially ready. Of course, ये करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, और वो क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ. Guts, will power, क्योंकि नहीं तो कमजोर पड़ जाएंगे हम और खर्चे यहाँ वहाँ कर डालेंगे. एक proper discipline, and if we have these 3 in us, guts, willpower and discipline, with all these steps that I just talked about, we are financially ready. Thank you. Karan sir. Thank you, ma'am, for your nice lecture on the topic Thank you, sir. financial management. You have told us that how financial management is very important in our lives to lead comfortable and tension-free life, but we should have guts, and also we should manage all these things very well. Now after this very good lecture on the topic, now the topic is open for discussion. So I would like to request participants, if they have any query or doubt, he or she can put it before Honorable Ma'am for answer or solution. Please. Is there any
Anybody having any question or doubt? Please come with your question or doubt. I feel nobody has any doubt or question. The speech was so clear and everything was illustrated with many examples, and it was very interesting because many proverbs are also were told to us, and I feel all have understood it. So after this, I would like to invite today's chairperson and the chief organizer of webinar series. Is there any question, sir, from you? No, sir. I would like to request chief organizer, Honorable Principal Dr. M. Ambedkar, sir, to deliver his concluding speech. Please, sir, welcome. Thank you, Professor Karad, sir. And today's resource person, Mamta Prasad from Dhanbad, Jharkhand. She just engaged her session on financial awareness and its rational management. My organizing team, including Vice Principal H.D. Misal, sir, Dr. Anita Dhole, madam, Dr. Dayanand Patwari, Dr. Anil Wadkar, sir. Here also joined Professor K.N. Kadam, sir, Santosh Todalge, sir, Professor N.B. Chaudhary, sir, Anita Dhole, madam, and all my participants. So, as per today's session, she completed very perfect time as allowed it to her. I was not thinking that financial management topic should be so interactive, and she made it very nicely and with examples also, that beggar example and all these things, and tips she have given, very nice tips, how much parts we have to save, where to save, don't use that any thing in the home to put up that cash, it should be deposited in the bank so that it get returned. So it was very best thing, because when I was very at high school level, so there was story in my village. One lady was at that time she was doing business of milk in the home, and after 2 to 5 years, when she collected the money, it was all broken by the rats. It was story and real story, and that parts of that bundle we have seen when I was in boyhood. Yes, so this should not happen, and everyone, I think, here taken tips how to spare our few money every in our every month, so that we can manage our wishes which we have planned. So this was very important topic, because taking knowledge is not important, but also financial management important for us. Every day we discuss here with various aspects, depending upon health, education, technical, but financial aspect should be discussed here, and it was explained by you very nicely and very perfectly, madam. In future also, if you have any new subjects with you, you are always welcome, and we are so much happy with your all the presentation today. Thank you, madam. Thank you, sir, for your concluding words and for your studious comments about the keynote speech. Sir, you are energizing us to keep on this webinar series running without any interruption. On behalf of the organizing committee, I thank you for this. I also thank today's honorable keynote speaker, who has accepted invitation of our college. She has spared her valuable time
and given very about the significant topic financial management. As she has told that money is not God, but it is also not less than God. So we all must be aware of this, and we should try to keep up ourselves financially strong if we want to run very or sustain in a good manner. So on behalf of the organizing committee of Shri Kumarswami College Ausa and this webinar series, I thank you ma'am once again. I also thank all organizing committee members for providing us variety of topics which we can hear and which we can discuss, and so we can enrich ourselves. So thank you organizing committee members. I thank Dr. Anita Dole ma'am, who has given very good introduction of today's invited speaker. And now I request all the participants to fill feedback form so that they can have their certificates, and at the end, with the kind permission of Chief Organizer and Chairperson of this webinar series, Honorable Principal Dr. M. Bedkar sir, I declare here that today's webinar is over. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you.